redefining the industrial landscape in Odisha. And you just heard I have with me Senior Director NALCO, Srinihar Mahanti. Welcome, sir. We have with us MD Infra Group, Mr. Subrakant Panda. Welcome to the Conclave, sir. And we also have with us Executive Director, JSPL Odisha, Mr. Manish Kharbanda. Welcome, sir. So here we have representatives of three big industries who have been investing in Odisha, continue to do so, and since this entire Odisha-Nirmana Conclave aims to set the tone for Odisha's future in industrialization, and considering their experiences in the state over the last few years, I would straight, one by one, ask them a little bit about their journey, and also, at this point, how do they see or foresee the future for Odisha in the industrial sector? So I would start with Mr. Manish Kharbanda. How has been the journey so far, and where do you see the future at this moment, right now? Thanks a lot for inviting me to be on this panel. Of course, Jindal Steel and Power is already invested about 30,000 odd crores in the state of Odisha. We generate employment to more than 15,000 employees here, and of course associated families. We have a 2 million ton steel plant, and it's expanding to about 6 million ton capacity with a 3.2 million ton blast furnace coming up, and of course a sinter plant and a steel rolling mill. And we can very proudly say that we have adopted technologies which are the best in the world. The best coal gasification plant, the first in India, and I think after South Africa we were very successful in implementing it is in Odisha. But I will not take time here to really spend on JSPL because it's a very well-known company, and I thought, true to the topic, I would come straight to what I look at. And beyond this, I will try to speak in Hindi as has been told to me, and I will try to combine English with that, but Odia I am not very familiar, so I apologize for that. तो आप अगर इसको देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन उड़ीसा में जो है, मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बात करना चाहूँगा सिर्फ, और कोई भी आप देश देखें या प्रदेश देखें, इंडस्ट्री के 3 सेक्टर होते हैं और ग्रोथ के प्लेटफॉर्म होते हैं. एक होता है प्राथमिक या प्राइमरी, जिसमें एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग ये होता है. दूसरा होता है सेकेंडरी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आती है, कोई भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग. और तीसरा होता है टर्शरी, जो कि आपका सर्विस सेक्टर होता है, टूरिज्म, होटल्स, ये सब 3 सेक्टर होते हैं. और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो देखी जाती है वो इन्हीं तीनों सेक्टर में बैलेंस की जाती है. पर अगर आप देखें जो विश्व में हो चुका है, जिससे हमें सीखना चाहिए कि जो भी बड़े देश हैं जहाँ पे ग्रोथ हुई है, वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी पे शुरू करके फिर टर्शरी में गए हैं. आप देखिए अमेरिका है, वो पूरी टर्शरी इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है. परंतु अगर आप देखें जो जैसे चाइना है, जहाँ पे वो काफ़ी सेकेंडरी इकोनॉमी है और प्राइमरी इकोनॉमी है. इंग्लैंड जब 1900 में शुरू हुआ था तो प्राइमरी से शुरू होकर सेकेंडरी में आया, फिर टर्शरी में आया. लेकिन तो इस तरह की ये ग्रोथ है, ये ज़रूरी नहीं होती है. मुझे लगता है कि ये मेरे अपने व्यूज़ हैं कि जो ये चीज़ें हैं, ये उस प्रदेश की या उस देश की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोजीशन है उसको देख के करनी चाहिए. मान लीजिए उड़ीसा है, उड़ीसा में आज 4.5 करोड़ की आबादी में करीबन 73% लोग लिटरेट हैं. बट ये जो लिटरेसी है, इसको अगर आप और ध्यान से देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर सिर्फ 6.7% लोग जो हैं वो ग्रेजुएट या उससे ऊपर हैं. तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो पॉपुलेशन उड़ीसा की है, उड़ीसा की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें किस तरह की इंडस्ट्री आनी चाहिए? इंडस्ट्री वो होनी चाहिए जहाँ पे इन लोगों को हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दें. आदमी जब खुद की कमाई करता है तो उसे ज़्यादा खुशी होती है. उसको कोई चीज़ खैरात में मिलती है तो उसकी आदत ख़राब होती है, लेकिन खुशी नहीं मिलती है. तो मुझे ये लगता है ये बैलेंसिंग कैसे की जाए. आपके यहाँ उड़ीसा में, हमारे प्रदेश में एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है रॉ मटेरियल का, चाहे वो आयरन हो, चाहे क्रोमाइट हो, चाहे कोल हो. आपकी 480 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, पोर्ट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं उड़ीसा का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या हमें ये जल्दी करनी चाहिए कि हम टर्शरी सेक्टर्स में जाएं, हम देखें कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, हम आगे जो क्या करेंगे, जो सेक्टर में हमारी मैन पावर अभी स्किल्ड नहीं है, वो स्किलिंग जो है वो अभी कोर सेक्टर में है. और कोर सेक्टर की ही ग्रोथ को लेके गया है. चाहे वो आप जापान को देखें, चाहे आप चाइना को देखें, जहाँ पे स्टील सेक्टर ग्रो किया या कोर सेक्टर ग्रो किया,
वहाँ वहाँ पे आगे जाके उन्नति हुई। चाइना को देख लीजिए आप, और अभी साउथ कोरिया को देख लीजिए, 2005 से कोर सेक्टर को ग्रो किया, अपने कॉम्पिटिटिव जो जहाँ पे उनको एडवांटेज था उस सेक्टर को ग्रोथ करके हम लोग ने ग्रोथ हासिल करी है। तो मेरा मानना यह है कि उड़ीसा में जहाँ पे इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं कि 16 साल से एक सरकार है, एक बहुत ही प्रगतिशील मुख्यमंत्री हैं, लगातार अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं, बट कहीं पे हमें यह भी देखना होगा कि हम कहीं बहुत तेज़ी से तो नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत तेज़ चलने से आदमी गिर जाता है। या मान लीजिए कि हमने 2005 में यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री लगाई, यहाँ पे 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, इतना ज़्यादा जॉब आई। क्या ये स्टील इंडस्ट्री पैसा बना पा रही है अभी? अगर जो आदमी जो फाउंडेशन होता है वो जमे ना, आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, फाउंडेशन में आपने ईंटें डाली, गिट्टी डाली या सीमेंट डाली, लेकिन वो सूखी नहीं, आपने बिल्डिंग बना दी, तो क्या बिल्डिंग खड़ी रहेगी या बिल्डिंग गिर जाएगी? तो मेरा मानना यह है कि जो पहले प्राथमिक सेक्टर हैं, जहाँ पे प्रदेश का एडवांटेज है, जहाँ पे उसके लोग स्किल्ड हैं, उसके साथ चला जाए। जो पहले इंडस्ट्री आई थी उनको तेज़ी के चक्कर में कहीं हम भूल ना जाएं, क्योंकि आप अगर देखें तो ये जो कोर सेक्टर है ये बुरी तरह से लॉसेस में है, बहुत बुरी तरह से। सर्विस सेक्टर आपके चाहे स्पॉन्ज आयरन प्लांट हो, ये सब बंद हो चुके हैं। इसका कारण इसमें प्रदेश की गलती नहीं है, ये विदेश की जो नीतियां हैं, हमारे सबका इम्पैक्ट हमारे देश में आता है और देश का इम्पैक्ट हमारे प्रदेश में आता है। तो अगर हम लोग उन जगहों पे फोकस करें जहाँ से हम इसको और रोबस्ट बनाएं, उसके बाद ईंट से ईंट रख के ही डेवलपमेंट हो सकता है। आपका जो ग्रोथ हुई है 10 साल में, चाहे वो 10.2% हुई है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ हुई आपकी टर्शरी सेक्टर में, आपका सेकेंडरी सेक्टर पीछे गया और प्राइमरी सेक्टर पीछे गया। तो ये सोचने की बात है, ये कह के मैं बंद करना चाहता हूँ अपनी बात। Mr. Pandap, जैसे I mean the way he said that the focus should be on the core sector, considering the fact that there is, we can say, a bit of shift of focus on non-mineral sector right now as well. What would be your take on that? Let me just first start out by saying that, IMFA belongs to Odisha and we have had a journey of 55 years, so I really hope I don't have to talk much about the company here. So let me, I just want to add one thing that what we are extremely proud of is our focus on value addition right from the beginning. And that leads me to the point that you just asked. I think the way forward for Odisha is value addition, and that is what the government has been focusing on. And it is not a surprise, given the embarrassment of riches that we have in terms of natural resources, that the bulk of the investment in Odisha will be mineral and mines related. But what I have always believed, and I'm glad to see that that happening now, that when your entire focus for whatever reason is on a specific sector, then you end up being held hostage, if I can use the word liberally, to the commodity cycle. And we do know that commodities are tremendously cyclical. Therefore, it is important that Odisha obviously should not and is not ignoring the mineral-based industries, but it is important to diversify away from just minerals and look at attracting investment in other areas and taking advantage of the population that we have. I mean, they can be trained and skilled in new technologies and in new industries. I think it's important to understand where our core strength lies, but also keep in mind that in addition to that core strength of minerals and mining-based industries, that we attract investment in other sectors so that the state's revenues are not subject to the cyclicality that commodity industries bring about. True. Mr. Manti, I would ask the same question to what just both of them have said, that the focus, it should not be ignored, mineral and mine industry should not be ignored, but at the same time, like Mr. Pandai is saying that, we must also get investment from other sectors for a balance. What do you have to say on that? You see, Kautilya or Chanakya, as you know, hundreds of years ago, he had told, a country will be known as rich or poor by the mineral strength it has. Odisha particularly is very rich in all minerals like chromite, manganese, iron ore, coal, bauxite, and so many things. So it is only a question of time that the state will belong #1 in India because of the mineral resources it has. And coming to the exploitation of minerals, one should not also forget that as present generation citizens, we have a duty to our future generations also. We should not go on consuming rampantly everything and leave nothing for our children.
So I am happy that in this direction, Indian Bureau of Mines has recently considered that low-grade ores have also to be used. Because if you use all the good ores to at competitive price and earn profit, the future will be left with nothing. So in bauxite, at least this has come, and NALCO is the first to implement those guidelines. That is less quality of alumina in bauxite, NALCO has started using. You all know regarding NALCO, so I need not go into the details. But my point is, India has become self-sufficient in aluminum. With Vedanta and Hindalco coming in, India has become self-sufficient. Still lot of imports taking place. As he told, Mr. Panda also told and Mr. Pai also told, it is the cheap aluminum, cheap steel coming from China, Korea and maybe the Middle East that is killing the aluminum industry or steel industry in India. But this is a temporary phenomenon. Competition is to be encouraged. We have to work hard to reduce the cost of production. You see, productivity, although there are many management theory, many practices, but basically it is the mindset. If we are not interested for improving productivity, no amount of robotics, no amount of technology, or no amount of procedures or consultants can advise you to improve the productivity. So competition is good and it will continue for some more years. Although in this downturn we are operating, but let me tell you, NALCO during last 30 years has not made loss. Although the economic market is down, aluminum is down all over the world, but NALCO is still able to earn profits. Why? Because of good practices, good technology, and committed people, and cooperation from government of Odisha, local people. Everybody is happy with NALCO style of working. So I am with this, NALCO has decided to invest another 30,000 crores in the state of Odisha in near future by way of greenfield aluminum smelter, brownfield expansions, development of Patangi and Utkal coal mines, and as a corporate, social, responsible corporate citizen, since we are consuming a lot of electricity in aluminum, it is our bounden duty to also reduce the pollution. So in this direction, keeping the guidelines of Government of India as well as state government, we have entered into renewable energy. We have set up, NALCO has set up 200 megawatt windmills in Andhra, in Rajasthan and Maharashtra. Now we are going to set up another 100 megawatt wind and 50 megawatt solar and 20 megawatt solar in Madhya Pradesh. Here also in Bhubaneswar, in our corporate office, our township and our research center at Gotpatna, all have been equipped with rooftop solar power. So this is a duty all industries must pay, although it is not cost economic nowadays, presently, but it is the duty of all industrial establishment to generate some green energy so that our fuel is kept for future, lessen the pollution load and go for sustainable development. This I can all say.